बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक खबर से। बोलान में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के करीब धमाका हुआ है। अब से कुछ देर पहले पुलिस के मुताबिक धमाके में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 9 एहलकार शहीद हो गए, जबकि कांस्टेबलरी के एहलकारों समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। बोलान में बम धमाके के पेश नज़र सिविल अस्पताल कोयटा में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगुर की बोलान धमाके की शदीद मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत बलूचिस्तान का हेलीकॉप्टर कोयटा से बोलान के लिए रवाना कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए जख्मियों को कोयटा मुंतकिल किया जाएगा। कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टर्स और अमला तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नई दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में रेफरेंस की फौरी समाअत और अदालती अमूर वापस लेने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस फौरी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। फैसले तक जस्टिस नकवी के सामने कोई मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। रेफरेंस के फैसले तक जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को किसी भी बेंच में शामिल ना किया जाए। मियां दाऊद एडवोकेट ने शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गंदम की काश्त के लिए या और काश्त के लिए ज़राई शोबे को सपोर्ट फराहम करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर कैश ट्रांसफ़र, कैश सब्सिडी देने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने अमली एतबार से वो काम करके दिखाया। 20 लाख घर हमारे सूबे में हालिया बारिशों की वजह से तबाह हुए। हमने वादा नहीं किया, हमने ऐलान नहीं किया इमरान खान की तरह। हम लोगों के साथ उनकी मुश्किल में खड़े रहे, उनका साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत वो जो 20 लाख मुतासरा ख़ानदान हैं या 20 लाख मुतासरा जो घर हैं उसकी मुरम्मत के लिए कैश डिसबर्स करना हमने शुरू कर दिया है पिछले दिनों। उसका भी बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। HPL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच खेला जाएगा जहां कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का आमना सामना होगा। कराची किंग्स के 8 मैचेस में 4 पॉइंट्स और कोयटा के 7 मैचेस में 2 पॉइंट्स हैं। दोनों टीमों को प्लेऑफ तक रसाई के लिए अपने तमाम मैचेस जीतने होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ मरहले के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। Of hosting such major events from the Doha round of trade negotiations in 2001, launching the Doha Development Agenda to improve the trading aspects of developing countries, to hosting the second South Summit in 2005, the largest gathering of leaders from the developing world. Excellencies, as we come to the end of the Istanbul Program of Action, we chartered out a vision and strategy for the sustainable development of LDCs. It is both timely and important to revisit its implementation. Despite progress in some areas, implementation of the Istanbul Program of Action has remained insufficient and uneven. Only 4 countries were able to graduate out of least developed status. In fact, the LDCs were victims of the pandemic of inequality, unavailability of vaccines, technologies, finance and opportunities. And they continue to be affected by the climate crisis with cascading effects of different shocks, often at the same time. Ladies and gentlemen, while LDCs make up 14% of the global population, they account for only 1.3% of the global GDP, 1% of the global trade, and merely 1.4%
of the global FDI. These multiple crises have taken a heavy toll on the least developed countries. Their GDP growth has plummeted, international trade has shrunk, poverty and food insecurity has risen, inequality has widened. Due to these factors, developing countries like Pakistan have also suffered a severe setback to their developmental goals. Mr. President, I am here to express Pakistan's full support and solidarity with the developed countries in their quest for social progress and economic prosperity. As we move towards the implementation of the Doha Programme of Action, Pakistan will continue to advocate several specific steps to advance sustainable development, including in the LDCs. However, meeting its ambitious targets will require revitalized global partnerships based on effective means of implementation in the following priority areas. Number one, we must address vaccine inequity through adequate and timely access to safe and effective vaccines for LDCs. Second, the historical commitment of ODA, comprising 0.7% of the GNI of OECD countries, must be fulfilled, of which 0.15 to 0.2% must be allocated to the LDCs. Third, we must address the increasingly unsustainable debt burden of many LDCs. It is a matter of great concern that 6 LDCs are classified as suffering from the debt burden, while 17 are at high risk of debt distress. Fourth, we must provide universal access to social protection in order to support the most needy and vulnerable. Fifth, we also need to reform the unequal international financial architecture, make it people-centric and designed to address special needs and weaknesses of the LDCs. Lastly, an international technology compact aligned with the SDGs should be adopted. It should offer easy access to the developing countries to relevant advanced technologies, develop their productive capacities, and bridge the digital divide. This would enable the least developed and other developing countries to participate on an equal footing in the emerging knowledge-based global economy. Mr. President, I am pleased to note that the Doha Programme of Action sets an ambitious target to enable 15 additional LDCs to meet the criteria for graduation by 2031. Concrete measures agreed upon in the Programme of Action, such as online university, an international investment support center, and a system of food stocks for the LDCs are laudable. Putting the welfare of the millions of people belonging to the LDCs at the center of affirmative policy action remains our most cherished goal. Let me assure you that Pakistan will actively support the implementation of the Doha Programme of Action, including within the framework of South-South cooperation. Before concluding, Mr. President, I would once again like to congratulate my brother, the Amir of Qatar, the government of Qatar, for the immaculate arrangements of this conference.
Qatar has further bolstered its standing in the community of nations as a champion of sustainable development of the global south. The beautiful city of Doha has indeed emerged as a global center of international events, as so very ably demonstrated through the successful hosting of the FIFA World Cup last year. I thank you all and thank you very much for providing this opportunity. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद